friends, this in this video 10th and 11th sum of paper number 1. Actually I mentioned in previous video that it has 10th and 11th sums, but videos were too long, so I divided in this. So 10th and 11th sum is not in previous video, but it is in this video. Find the mean of the following frequency distribution by method of step deviation. So you have been given which method, so you have to solve it by only step deviation. You cannot apply any other method. And I think if they have not told step deviation method, but you must go with step deviation if they have not asked for any method, because I think it is the easiest method, though you have to draw the bigger table and more columns, but it is the easiest method. Okay, now this is given in your question, so I have taken on this information from your question only. Now what I will do, I will make the xi column. So how can I prepare the xi? So 0 plus 50, that's 0 plus 50 divided by 2, that's 25. So that's 25. Now I don't have to calculate for each this cell. What I just have to keep adding 50 to the first ones. So that's 75, 125, 225, 275, and that's it. Now I can take any cell as A among these all. इसमें से कोई भी मैं एक A ले सकता हूँ. I have taken it 175 as A. Now what is UI? UI is equal to xi minus A. Here you have to mention what is A. So C and A is mentioned. What is C? That's a class length. Difference between upper limit and lower limit. This is upper limit and this is lower limit. So difference between upper limit and lower limit is 50. So C is equal to 50. Now what I will do, जहां पे भी मैंने ए लिया हुआ है उसके बराबर सामने जीरो, ऊपर माइनस में चले जाना है, -1 -2 -3, and this is +1 +2 +3. So as per my opinion, this is the easiest method for which you should go. Okay, now FIUI, so this is the frequency column and this is UI column. So I will keep adding. So it is 10 into 3 plus minus minus. So minus 30, minus 30, minus 30, 0, 15, 16, 6. Now minus minus plus, so minus 30 minus 30 minus 30, that's minus 90, and this is 31 plus 6 37. Now 90 में से 37 को subtract कर दो, निकाल दो, that's I think 30 40 and 50, so 53, and 53 will be given minus sign because bigger number sign, and 90 is bigger number and it has minus sign. So is sigma FIUI is minus 53. Now I will apply its formula, A plus sigma FIUI upon sigma Fi. Now A is equal to 175, that's minus 53 upon 100 into C. Now 175, this will be 0.53, 53 को 100 से divide किया, right? And this is plus minus minus. Now 26.5, and if I subtract it, that's 148.5. If you don't know how to subtract in points, let me show it to you. That's 175.0, if I can write zeros, and minus 0 to 6.5. Point के नीचे point आना चाहिए. That's like this. Now I can subtract. So 5 minus 4, that's 10. 5, 4 में 6 गया, no नहीं जाएगा, that's 6. Here 14, 14 में से 6 गया, that's 8, 4 and 148.5. So I think you understood how to solve this. Let's go next. Okay, uh, so this is about segment. That segment, what they have used is minor segment. So before I explain this sum, let me make it clear what is sector and what is segment. You may not know what is sector, what is segment. So this is a circle, right? This is a radius. Radius is so bolte whose one end point is on center and one end point is on the circle. So this is radius. This is radius, right? This is radius. Now let me name it. That's O, A, and B. So area formed by two radius, enclosed area formed by two radius. ये दोनों radius की वजह से enclosed area बना है, उसको हम बोलेंगे sector. This is sector. Sector. Let me make it dark. And if I draw a chord, chord is any line segment whose both the endpoints are on circle, and they may it may pass from center or may not. It is not necessary that it passes from the center. For diameter it is necessary. So let me draw it here like this. So I have drawn like this. So if I draw the chord,
अगर मैं कॉर्ड बना देता हूँ तो नीचे जो एरिया अलग हुआ, दिस एरिया, आई एम, लेट मी मेक इट ब्लैक. So these area is segment. This area is segment. Black area is segment. So how you will find segment? First of all, you find this sector. Sector includes this whole green part. Even sector में segment तो आ ही गया है. This area is segment. So sector में segment आ ही गया है. Then what you do? फाइंड द ट्राइंगल. ये ट्राइंगल को फाइंड कर लो. सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस दिस ग्रीन पार्ट, सो रिमेनिंग पार्ट इज ब्लैक पार्ट. सो दैट्स segment. So what I will do, I have given 84 centimeter diameter, a chord of a circle of 84 centimeter diameter पे से radius मिल गया, r is equal to d upon to 42. So this is 42, this is 42, that subtends 60 angle at the center. Find area of minor segment. So this is segment, yellow part I will find. So before I do anything, I will definitely go for sector. Right, these are the statement what I explained. R is equal to 42, theta is equal to 60. Now I will apply pi r square theta upon 360. Area of the sector, formula for the area of the sector. Pi की value 22 upon 7. Now r की value 42, 42 2 times, theta is 60. Now I will simplify it. So how I will simplify? That's 60, 6 are 360, 7, 6 are 42. So remaining 20, so 6, 42, नीचे 6. So 6, 6 cancel, 20 to 42. So my answer is 924. Now आगे क्या करना है? सो आई विल फाइंड दिस ट्राइंगल. मैं पूरा सेक्टर, यानी मुझे क्या अभी जो आंसर मिला 924, दैट इंक्लूड्स व्हाट? दैट इंक्लूड्स ऑल दिस एरिया, दैट इंक्लूड्स ऑल दिस एरिया. लेट मी मेक इट येलो. दैट इंक्लूड्स ऑल दिस एरिया. सो उसमें ये जो नीचे का एरिया है, ग्रीन लाइन के नीचे का एरिया, दैट सेगमेंट, वो तो आ ही गया है. सो मैं ये ट्राइंगल फाइंड आउट करके, मैं ये ट्राइंगल फाइंड आउट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. ट्राइंगल फाइंड आउट करके उसको सेक्टर में से माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सो आई विल गेट माय आंसर. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. Here there is OAB. Now, sorry, this is OAB, not this is OAC. According to the figure, it's OAC. OAC. So right C here, OAC. Now, how I will find the area of triangle? Okay. So before we start the finding area of triangle, let me show you one thing. Let me take my scale and let me draw a line of 6 centimeter. Line of 6 centimeter. Now let me draw another line of 6 centimeter. Another line of 6 centimeter. Now I do not take any measurement. I just join these two endpoints. I joined it. And let me measure the black line. So that's not as perfect as I want, but that's automatically 60, automatically 6 that I want to convey through this. There is difference of 2 point, but it will not practically come. Let me measure this again. It's 6. Yeah, it's 6, but it should be little bit below, like this. Yeah, it's perfect 6, right? And 6. So it will be definitely 6, and area एंगल, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल. सी दिस रेड लाइन, सो ये रेड लाइन के सामने का एंगल ये हुआ. सो लेट मी मेजर दिस एंगल. सो दिस एंगल would be 60. You can see 60. You can, let me zoom it, that's 60. Okay, now ये जो ग्रीन रेड लाइन है उसके सामने का एंगल हुआ दिस वन. सो लेट मी मेजर इट. दैट यू कैन सी अगेन 60. सो अगर दो साइड सेम है, तीसरी साइड ऑटोमेटिक सेम होगी और तीनों तीन एंगल सेम हो जाएंगे. अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल सेम. सो हियर आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल थ्रू हेरोइन, बट प्रॉब्लम इज व्हाट? आई डोंट नो अबाउट दिस ग्रीन लाइन. ग्रीन लाइन का मेजर नहीं है. सो दिस इज 42, दिस इज 42, सो दिस विल बी ऑल्सो 42. एंड दूसरा उसने एंगल बोला है 60, राइट? तो ये लाइन के सामने का एंगल ये हुआ, ये लाइन की सामने का एंगल ये हुआ. ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, इसमें से ये 60 है. ये दोनों का प्लस 120 होना चाहिए, राइट? और दोनों सेम है तो दे मस्ट बी 60 60. सो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल.
राइट, समबाजु त्रिकोण था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इसमें मुझे क्या करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, सो आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो दैट इज 42, 42 थ्री टाइम, दैट 63। दिस आई एम गोइंग थ्रू हेरोइन सेमेस्टर टू नाइन्थ. So I'm going through a heroine. Now heroine formula is S minus A, S minus B, S minus C. If you remember ninth semester too. S की वैल्यू है 63, 63 में से 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस. नाउ 63 के मैंने छोटे से छोटे पार्ट कर दिया. 7 थ्री ज़ा 21 थ्री ज़ा 63, या तो 3 थ्री ज़ा 9 7 ज़ा 63. देन 63 में से 42 गया तो 21, 21 के पार्ट हुए 7 थ्री ज़ा सेम, 7 थ्री ज़ा सेम, 7 थ्री ज़ा. नाउ जिसकी टीम बनेगी वो रूट से बाहर आएगा. सो आई थिंक this seven has come out. Now 3, so this three come out. So this 7, so this seven come out. Now 3, so this three come out, and this 3 is alone, it has no companion, so it will remain inside the root sign. So that's 441, 7 3s are 21, 7s are and 3s are, and root 3 value 1.73. So this is what 762.93 area of triangle. Now, if you know area formula for the area of equilateral triangle, you can apply that here. That's let me do it somewhere here. Yeah, it has enough space. So area of equilateral triangle is root 3 upon 4 into side square. So you can, side is 42 in this, so 42 square. You can solve it with this also. Let me show it to you how it works. So 42 square means 42 into 42, that's 1764. That is multiplied by root root 3, that is 1.73, and that will be divided by 4. So that's 762.93, and we have got the same answer, 762.93. So if you think this one is easier method, this formula is easier, so you can go with that also. Now let me come down. Okay, so how I will do, a sector में से मैं ट्राइंगल माइनस कर दूंगा. 924 जो हमने फाइंड आउट किया था पूरा सेक्टर, दैट्स 924. आई विल सब्ट्रैक्ट इट. सो माय फाइनल आंसर इज 161.07 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम. लेट्स गो नेक्स्ट. Hirani Tuition has developed an MCQ application also. MCQ एप्लीकेशन में कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल करनी होगी. इट विल नॉट वर्क विद मोबाइल फ़ोन और विंडोज़ फ़ोन. कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करनी है. गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू इंस्टॉल, यू कैन कॉन्टैक्ट हिरानी ट्यूशंस. दिस इज़ वेरी नाइस एप्लीकेशन एंड इट विल हेल्प यू टू गेट द बेस्ट मार्क्स, बिकॉज ये ई एम सी क्यू बुक हो गई. एम सी क्यू बुक है, बट ये एम सी क्यू बुक यू कैन नो द लिस्ट ऑफ ऑल इनकरेक्ट आंसर, राइट. जो जो इनकरेक्ट आंसर है उसका लिस्ट मिल सकता है. यू कैन रीटेस्ट, यू कैन डू इट अगेन. सो दिस इज वेरी वेरी नाइस एप्लीकेशन. You can go to www.hiranitutions.com and go to study mail section and download it. Okay, thanks for watching. Next video will be next terms will be next video. Thanks for watching.